Good morning, students. In today's lecture, we will discuss the numericals of Kirchhoff laws. First question is example number 3.7 of NCERT. Page number is 117. In this question, the circuit diagram is, this is a 10-volt battery which is connected to a 1 ohm resistance, right? And then it is connected to a 4 ohm resistance, 4 ohm resistance here, and it is connected to here 2 ohm resistance. Then here it is 4 ohm and this is 2 ohm, and this is 4 ohm, and it is connected to a cell 5 volt, right? Question is, find the current in each branch. Find the current in each branch of this network. So from here we can assume if I1 is the current flowing. Now you can mark this point as A, B, C, D, and this is E, right? Now from first cell I1 is the current entering. At point A it get divided, I2 be the current flowing through this 4 ohm, and the remaining I1 minus I2 flows through this branch. Now from this cell, let us suppose I3 be the current flowing, and at this point B, now the two current are entering, I2 and I3. So here it become I2 plus I3. Now at point C, in this branch I1 is the current flowing, तो यहाँ कितना हो जाएगा I2 plus I3 minus of I1, right? I2 plus I3 यहाँ से एंटर कर रहा है, I1 इधर गया तो इधर कितना हो गया I2 plus I3 minus I1. Now second step is, we have three unknowns, I1, I2 and I3. So you need how many equations? 3 equations are required. 3 equations are required. For this you have to take the 3 closed loop. First loop I will take A, B, C, A, and before that I will put the sign here. Current flows from higher potential to lower, right? Positive to negative, this is positive to negative, this is positive to negative, positive to negative, positive to negative, this is positive, this is negative. So in the closed loop A, B, C, A, I will apply A to B. First element is 4 ohm. I will take first sign, this is 4 into I2 plus 4 into I2. Then B to C, it is plus 2 into I2 plus I3. First sign is plus 2 into I2 plus I3. Then here, this is C to A, this is plus 1 into I1. In this branch, the current flowing is plus I1. Then minus 10 equal to 0. तो ये आपके पास बन गया 6I2 plus 2I3 plus I1 equal to 10. This is equation number 1. Next loop is, in the closed loop, ADCA. You can take any other way also, ADCA. In this ADCA, first I will start from A to D. First sign is plus 4 into I1 minus I2. Potential drop across this is 4 into I1 minus I2. D to C, पहला साइन कौन सा है? माइनस, minus 2 into I2 plus I3 minus of I1, right? Then next is plus 1 into I1, then minus 10 equal to 0. Now you can solve this, combine the terms containing I1, 4I1, and this is plus 2I1 and 1I1, 7I1. This is minus 4I2, minus 2I2, minus 6I2, minus 2I3 equal to 10. This is equation number 2. Student, from 1 and 2 you can, if you add these two, तो ये 2I3 आपकी eliminate हो जाएगी. If you add 1 and 3, तो आपकी 2I3 add हो जाएगी, cancel out हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7I1 plus this is 8I1. 6I2 भी आपका cancel हो जाएगा यहाँ से, is equal to, this comes out to be minus 2, this is 7I1 minus 6I2. अगर आप 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, then you get the second equation. This is 7 plus 7I1 plus I1. This is minus 2. This is 6I2.
this get cancel out. एक मिनट रुकिए. This is, so from here you can solve the value of I1 plus, this is 6I2 plus 2I3 is equal to 0. Second equation 7I1 minus 6I2, this is minus 2I3 equal to 10. This is okay. इसको आप खुद solve करेंगे. Next loop is in the closed loop. In the closed loop B C D E A. In the closed loop B C D E B. In the closed loop B C D E B. B C D E B में अगर आप पहला चलते हो तो this is 2 into I2 plus I3 plus sign. First sign I have taken plus of 2 into I2 plus I3 minus of I1. Then it is first sign minus 5 equal to 0. Combine the terms containing 2I2 and this is 4I2. Then 2I3, this is 4I3 minus 2I1 equal to 5. Now you have these three equations, 1, 2 and 3. Now you have to solve these three equations, I1, I2 and I3. From here you will get the, this is, after this you have to solve this. Solve 1, 2 and 3 and find the value of I1, I2 and I3. Right? So students, you can see its solution from NCERT also. Next is find example number 3.6. There are 12 wires forming a cube. 12 wires of equal resistance forming a cube, each of 1 ohm. Each wire is of 1 ohm. Right? This is A, B, C, D. This is P, Q, R and S. So here the battery is applied. Battery of 12 volt, 10 volt is applied across the diagonally opposite corners. Right? Question is find the effective resistance of this network and current drawn and current flowing through it. Current flowing through it. तो अब हम यहाँ पर क्या लेंगे? 6I is the current flowing through this. Why I have taken here 6I current, that I will tell you after this. At this point A, there are 3 branches and all these 3 branches having the, this is a cube made up of 12 wires, each of resistance 1 ohm. वायर का रेजिस्टेंस क्या है? सेम. तो 6I करंट ए पॉइंट पे, यहाँ 2I करंट फ्लो होगा, यहाँ 2I करंट फ्लो होगा बिकॉज इट गेट इक्वली डिवाइडेड 2I. राइट. अब देखो 2I करंट पी पॉइंट पे, यहाँ से 2I, तो इधर कितना हो गया I और इधर से भी कितना हो गया I. यहाँ पर देखें ये 2I इधर I इधर I. ठीक. इधर 2I आया तो इधर I और इधर भी I. अब किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है कि द करंट विच एंटर्स एट अ पॉइंट द सेम करंट लीव्स दैट पॉइंट. तो अब देखो ये I इधर से आ रहा है, एक I इधर से, Q पॉइंट पे कितना हो गया 2I. यहाँ से एक I आ रहा है और इधर से एक I आ रहा है, इधर कितना हो गया 2I. इधर से एक I आ रहा है, इधर से एक I आ रहा है, तो कितना हो गया 2I. तो ये कितना हो गया आपके पास 6I. कितना हो गया 6I. द करंट विच एंटर्स द सेम इज द करंट दैट इज लीविंग. तो हम यहाँ से ओम्स लॉ से करेंगे. 10 volt is equal to V equal to I into R effective. R effective, total current is 6I. This is R effective. This is 5 by 3 equal to I into R effective. That is 5 by 3 into I is equal to R effective. Now I have two unknowns. One is R effective and second is the current. For this I will apply the Kirchhoff law in the loop A D C R E A. ये A D C R E A. This is E. Right. तो अब A to D, अगर ये रेजिस्टेंस 1 ओम है, दिस इज प्लस 2I इंटू 1 प्लस 2I इंटू 1. यहाँ से इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस 1 ओम. दिस इज प्लस I इंटू 1 ओम, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, प्लस 2I इंटू 1 ओम
फिर यहाँ चले, पहला साइन कौन सा आएगा, -10 इक्वल टू 0, तो 5i इक्वल टू 10, तो i कितना हो गया आपके पास 2 एम्पियर। अगर i 2 एम्पियर है, सॉरी i 10 है, पुट इट इन हेयर, तो r इफेक्टिव कितना हो गया, दिस इज 5/3 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5/6 ओम। रेजिस्टेंस इज 5/6 ओम। स्टूडेंट इफ यू विल टेक हेयर i, अगर आप i लेते तो यहाँ पर 3 पार्ट्स होते, i/3 i/3 i/3, फर्दर होते i/6 i/6 i/6, तो ये सारा फ्रैक्शन में हो जाता। टू अवॉइड दैट फ्रैक्शन वी हैव टेकन इट एज 6i। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज Wheatstone bridge principle. Next is Wheatstone bridge principle. Wheatstone bridge principle. क्या है ये Wheatstone bridge principle? According to this, if the four resistances P, Q, R and S are arranged in this way, and at the center there is a galvanometer whose resistance is G. This is a device which is used to detect the current. This is a key K1, and here we have connected a cell of EMF E through a key K2. Right now here I is the current. What is this Wheatstone bridge principle? If we close this key K1 and key K2, this is point A, this is point B, this is point C, this is point D. On closing K1 and K2, if galvanometer shows zero deflection, this means current through this branch is zero. Zero deflection is current through galvanometer is zero. और करंट ज़ीरो कब होगा, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम. दिस मीन्स द पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट डी, देन P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, एंड वाइस वर्सा. ये रिवर्स भी आपका पॉसिबल है. राइट अब इसका प्रूफ करने के लिए हम वही किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे. प्रूफ ऑफ दिस, हाउ वी कैन प्रूव इट, लेट I be the current flowing through this. At point A, I1 is the current flows from this resistance, I minus I1 flows from this. IG at point C, IG is the current flowing through this, और तो रिमेनिंग I1 माइनस IG यहाँ से आ जाएगा. तो अब D पॉइंट पे कितना करंट हो गया, IG इधर से आ रहा है, I माइनस I1 इधर से, तो यहाँ कितना होगा, I माइनस I1 प्लस IG. पुट द साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस plus minus, this is plus minus. Now I will apply the Kirchhoff law in the closed loop A C D A to C चले, तो ये कितना हो गया, प्लस P इंटू I1, पोटेंशियल ड्रॉप P इंटू I1, यहाँ से यहाँ C to D चले, प्लस G इंटू IG. G इज़ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस. नेक्स्ट D to A चले, तो पहला साइन आ रहा है माइनस I इंटू R equal to 0. Right, so this is equation number 1. Now I will take the closed loop CBDC. C to B चले, पहला क्या है, प्लस I1 माइनस IG इंटू Q, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस C to B. B to D पहला साइन क्या है, माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S. D to C कौन सा है पहला साइन, माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ गैल्वेनोमीटर शोज zero deflection means IG equal to 0. Put it in 1 and 2. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी. दिस इज P इंटू I1 equal to I minus I1 into R. This is equation number 3. Now equation number 4, अगर हम IG को 0 पुट करें, यहाँ पे भी ये 0, तो I1 into Q equal to I minus I1 into S. This is equation number 4. Now when you have divided it, जब आपने इनको divide 3 and 4, तो P upon Q किसके इक्वल हो गया, this is R upon S. So this proves the Wheatstone bridge principle.
So students, in this way you can solve the question also. One question I am going to discuss. Suppose the question is, this wire has the resistance 4 ohm, this is 8 ohm, and this one is 5 ohm, this one is 10 ohm, and there is a cell of EMF. Here it is 6 ohm. This is 6 ohm and this is 10 volt with the internal resistance of 1 ohm. Right? There is the internal resistance of 1. Question is, find the effective resistance and current drawn. And current drawn from it. तो स्टूडेंट पहले आप चेक करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में वेदर इट इज़ फॉलोइंग व्हीटस्टोन और नॉट. सी दिस अपॉन दिस, अगर इसको P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R मान लें और इसको क्या मान लें S, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S. दिस इज़ 4 अपॉन 8 इक्वल टू 5 अपॉन 10, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2. तो करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस इज 0. रेजिस्टेंस इज 0. तो आप क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट 6 ओम रेजिस्टेंस, निगलेक्ट 6 ओम. तो अगर आप 6 ओम को निगलेक्ट कर देंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 4 ओम, दिस इज 8 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 10 ओम, एंड देन इट इज कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1. राइट. तो अब आपके पास ये दोनों कैसे हो गए सीरीज़ में 12 ओम, ये दोनों कैसे हो गए सीरीज़ में 15 ओम. नाउ देयर इफेक्टिव इज दे आर इन पैरेलल 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 प्लस 15. तो ये आपके पास आ जाएगा 12 इंटू 15 डिवाइड बाई 27. दिस इज़ 3 5 7 9 3 4 3. तो ये कितना आ गया 20/3. अब 20/3 और 1 ओम कैसे हैं, आर इफेक्टिव इज़ 20/3 प्लस 1 सीरीज़ में. तो 320 प्लस 3, दिस इज़ 23/3. तो करंट निकालना है, V इक्वल टू I इंटू आर इफेक्टिव. V इज़ 10, I इक्वल टू 23/3. तो I कितना आ जाएगा 30/23 एम्पीयर. राइट स्टूडेंट. So in this way you can solve the question of Wheatstone bridge. Thank you.